Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 18, Association of Attributes is continued today, lecture number 5. Now in this lecture, I will discuss an important exercise question for the topic test of independence. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the exercise question for test of independence. The contents of today's lecture is based only on exercise question for the topic test of independence. Now students, I am going to start an important exercise question for the topic test of independence. First we read the statement of exercise question, then we make the contingency table using the given information. The statement of this exercise question is out of 900 persons, 300 are literate. Among the illiterates, 400 have not travelled beyond the limits of their districts. 200 of the literates are among those who have travelled. Find out by calculating the value of Chi-Square Statistic if there is any association between travelling and literacy. Here students, we have two attributes, travelling and literacy. Then we make the two attributes into two categories. First one is the literate and second category is illiterates, and on the right hand side vertically I show traveled and not traveled. Here students, total persons are 900 as given in the question, और इसको मैं राइट करूंगा टोटल्स में बिल्कुल राइट कॉर्नर पे बॉटमली, और देन 300 आर literate persons are 300. तो इसको टोटल्स में स्टूडेंट्स में राइट करूंगा लिटरेट्स के कॉलम में. लिटरेट्स आपके पास टोटल जो है वो 300 है, इसको हम लोग टोटल में राइट कर देंगे यहाँ पे, और ये आपके पास थर्ड रो के अंदर 300 literates are given. और उसके बाद नेक्स्ट अमंग द illiterates का कॉलम आपके पास सेकंड कैटेगरी है illiterates, और उसमें आपके पास 400 persons are those who have not traveled हैं. इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो बोल्ड किया हुआ है. ये आपका इस कॉलम में जो है इसको पेस्ट करेंगे 400 को. देन स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट जो है 200 ऑफ लीटरेट्स में से 200 जो हैं वो लोग हैं जो कि ट्रेवल्ड करते हैं. तो 200 आपके पास लीटरेट के कॉलम को टिक करेंगे और देन इधर से वर्टिकली ट्रेवल्ड में, और ये आपके पास लीटरेट में से 200 जो हैं वो आपके पास ट्रेवल कर रहे हैं. तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, और रिमेनिंग कॉलम्स को, रिमेनिंग जो आपके पास बॉक्सेस हैं इनको हम लोग फिल करेंगे यूजिंग टोटल्स. तो हेयर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 300 अगर लिटरेट्स हैं और टोटल आपके पास यहाँ पे 900 जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं. तो 900 minus 300 we have illiterate persons are 600 और 600 में अगर आप देखें तो आपके पास टोटल illiterate 600 है, और इसमें 400 जो हैं वो आपके पास not traveled है. It means that 200 are those who traveled. Then students आपके पास यहाँ पे illiterates टोटल 300 है और आपको गिवन है 200 are those who traveled. तो 100 पीपल्स आर दोज हु डू नॉट ट्रेवल्ड. ठीक है, और ये कॉलम भी आपके पास फिल हो गया. देन आपने रो वाइज टोटल करना है. 200 प्लस 200 इक्वल टू 400, और 100 प्लस 400 इक्वल टू 500, और इसको वर्टिकली टोटल करेंगे तो विच इज 400 plus 500 equal to 900. Now students, in this way you complete the 2 by 2 contingency table, and two attributes and each attribute have two categories, literates and illiterates, traveled and not traveled. तो हमारे पास बोल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन थी, इसको मैंने बोल्ड किया है, और रिमेनिंग इंफॉर्मेशंस को, रिमेनिंग जो आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनको मैंने फाइंड कर लिया है यूजिंग their totals. After making 2 by 2 contingency table using attributes traveling and literacy as given in the question, now students we follow the following steps to test the independence of these attributes.
फर्स्ट स्टेप इज दैट स्टेट द नल हाइपोथेसिस, और इसमें हम लोग दो हाइपोथेसिस जो है इसको राइट करेंगे. फर्स्ट वन इज द null hypothesis, which is denoted by H naught. The attributes are independent and we can say that there is no association between traveling and literacy. दोनों attributes के दरमियान कोई association नहीं है. And इसके against एक hypothesis हम लोग write करेंगे, which is H1 alternative hypothesis. The attributes are not independent. This is the there is association between traveling and literacy. And the second step is that level of significance as given in the question, and here alpha equal to 5%, alpha equal to 0.05 you can also write as. Now third step is test statistics. इसमें हम लोग अपना फॉर्मूला chi-square का उसको राइट करेंगे. chi-square equal to summation into FO minus FE का whole square over FE. Here FO is observed frequencies as given in the question, and FE is the expected frequencies. Here we have to find these expected frequencies. There are the three steps. Now the fourth step is computations. Here we have to find the expected frequencies using formula row total into column total and divided by its grand total. We have to find the expected frequencies against the each observed frequencies, and first observed frequencies is f naught equal to 200, और f naught के against students हमारे पास row total के अंदर which is 400 और its column total is 300. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इट्स ग्रैंड टोटल 900. आंसर इज 133.33. सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 200. 200 के अगेंस्ट जो आपके पास रो टोटल है विच इज 400 और इट्स कॉलम टोटल इज 600. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ग्रैंड टोटल पे डिवाइड कर देंगे 900. आंसर इज 266.67. Similarly, next observed frequency is 100. 100 के रो टोटल में 500 यूज करेंगे और इसके कॉलम टोटल के अंदर 300 है. 300 मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइडेड बाय इट्स ग्रैंड टोटल 900. आंसर इज 166.67. और लास्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज 400. 400 के अगेंस्ट 500. 500 मल्टीप्लाई बाय 600 or divided by 900. Answer is 333.33. Now students, using this formula you can find the values of the expected frequencies. In fourth step computations, we can also find the value of chi-square statistics using its formula. Our formula is summation FO minus FE whole square over FE. और using this table we have to find the value of chi-square statistics. सबसे पहले आप स्टूडेंट्स अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को माइनस करना है इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से, और टेबल में हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज 200 और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज गिवन है 133.33. माइनस करके इसको स्केयर करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 133.33 से. समेशन को प्लस साइन में चेंज कर दें और नेक्स्ट आपके पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है विच इज 100 माइनस 166.67 और डिवाइडेड का स्केयर लेके डिवाइड करेंगे इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 166.67. एंड सिमिलरली फॉर नेक्स्ट टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज. इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ chi-square स्टैटिस्टिक्स. और इसमें आपके पास फर्स्ट रिजल्ट 33.33 है, सेकेंड आपके पास 26.67, 16.67 and 13.33 इनको ऐड करेंगे तो you can get the value of the 90.00. This is the value of chi-square statistics using formula chi-square equal to summation FO minus FE whole square over FE. और इसमें हम लोगों ने अपने टेबल को यूज किया जिसमें हम लोगों ने अपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को ऑलरेडी जो है वो फाइंड कर लिया था, और देन हम लोगों ने जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को माइनस किया है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से, स्केयर लेके उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड किया है और देन इनको ऐड कर दिया है. तो आपके पास इस तरह आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं chi-square statistics की वैल्यू को. Now the fifth step is critical region. Here we check the whether the attributes are independent or not. For the test of independence of attributes, first we have to find the value of degree of freedom, and degree of freedom formula is r minus 1 into c minus 1. R is the number of rows and c is the number of columns, and we have the 2 rows and 2 columns. R की value 2 use करेंगे और c की value 2 use करेंगे, then multiply and that the value of degree of freedom is 1.
Then students from chi-square table we have to find the value of table value. तो first हम लोग जो है chi-square alpha degree of freedom को अल्फा की वैल्यू को 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेक करेंगे इन chi-square table and we have the value of 3.841 और chi-square calculator की वैल्यू already we have to find in 4-step computation 90.00 and the decision is that if chi-square calculated is greater than chi-square alpha degree of freedom table value से अगर हमारे पास calculated value जो है greater होगी तो so we reject our h naught. तो here 90.00 is greater than 3.841 so we can say that h naught h attributes are not independent and there is a significant association between traveling and literacy at 5% level of significance. That is the sixth step, that is conclusion. Here students, an important exercise question has been discussed for the test of independence of association of attributes. इंशाल्लाह students next lecture में आपसे मुलाकात होगी next topic के साथ. अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.